your 내 heart. 마음이 흐르기 시작합니다. Your heart begins to flow. 청소년들이 고립되는 순간 The moment that the youth are isolated, 더 이상 아무것도 할 수가 없었습니다. they can do nothing about it. 그러나 마음이 흐르고 대화가 되고 소통이 되는 순간 But the moment they're able to have exchange and communication, 이제 새로운 마음이 흘러들어오고 new heart enters, 새로운 지혜가 흘러들어오고 new wisdom enters. 내게는 이제 밝은 마음이 없었지만 Yes, I didn't have a bright heart, 이제 정말 하나님 속에 밝은 마음이 이렇게 흘러들어오고 but the bright heart of God enters into me. 내게 지혜가 없지만 Yes, I don't have wisdom, 소통하고 교류하면서 이제 새로운 지혜도 흘러들어오고 but through communication and exchange, new wisdom enters. 하나님의 마음이 우리 속에 흐르면서 And as the word of God flows into our hearts, 우리가 지혜를 얻고 행복을 얻고 소망 얻고 믿음을 얻게 하십니다. we gain faith and hope and happiness and wisdom. 여러분 안녕하십니까? 반갑습니다. नमस्ते सभी को सबको मिलकर बहुत खुशी हुई। 오늘 아카데미 첫 번째 시간에 저희들 제자 양성에 관해서 청소년들의 사고력과 자제력이 향상됐을 때 청소년들의 마음에 변화가 오는 부분에 대해서 함께 이야기를 나누겠습니다. आज हमारा शिष्यत्व का पहला सत्र है एकेडमी का और आज हम लोग बात करने वाले हैं सोच और आत्म अनुशासन और युवा में प्रेरणादायक 네, परिवर्तन कैसे हो 먼저 सकता है। 성경 본문 말씀을 읽고 시작하겠습니다. और पहले तो हम वचन को हम पढ़ के शुरू करेंगे। 디모데후서 3장 15절부터 17절 말씀입니다. दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 15 से 17 वचन। 15절입니다. 또 내가 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라. और बचपन से पवित्र शास्त्र ने जाना हुआ है कि तुम मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बन सकता है। 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기에 유익하니 संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा में रचा गया है, उपदेश और समझ और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक 이는 है। 하나님의 사람으로 온전케 하며 모든 선한 일을 행하기에 온전케 하려 함이니라. ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध हो और हर एक भले काम के लिए वो तत्पर हो 예, जाए। 청소년들의 마음의 세계를 바로잡고 이끌어주면 너무너무 좋은 하나님의 일꾼이 될 수 있습니다. जी हाँ, अगर युवाओं के मन को धर के उसको सही मार्ग पे चलाए तो सुसमाचार के महान कार्यकर्ता बनेंगे। 저희들은 2001년도에 국제 청소년 연합이란 단체를 설립을 했습니다. और 2001 में हमने जो अंतर्राष्ट्रीय 그래서 युवा 지금 संस्था 20년 हमने 가까이 स्थापित किया। 많은 젊은 청소년들의 변화를 받고 또 예수님의 제자로 길리움을 받아서 전 세계에 흩어져서 많은 선교의 일들을 하고 있습니다. और 20 साल के लिए ये जो शिष्यत्व हम लोग युवा में डाल रहे हैं और पूरे दुनिया में वो सेवाकाई कर रहे हैं। 2001년에 이 단체가 세워지기 전에 그 6년 전으로 이제 거슬러 올라가면 1995년에 어떤 한 학생의 변화로 말미암아 이렇게 시작이 되었습니다. और ये जो संस्था है 5 साल पहले 1995 में एक युवा के जरिए हुआ। 청소년 단체 설립하신 박옥수 목사님께서 1995년도에 미국 LA에 집회를 하러 가셨습니다. और 1995 में जो फाउंडर जो है पास्टर ऑक्सू पार्क जो है LA अमेरिका में गए थे एक बाइबल सेमिनार के लिए। 며칠간 이제 성경 세미나를 하고 계시는데 한 부인이 목사님을 찾아왔습니다. और वे बाइबल सेमिनार कर रहे थे तभी एक बहन उनके पास आए। 부인의 마음속에 그 아들의 문제로 인해서 너무너무 이렇게 고통스러웠습니다. और ये शादीशुदा बहन उनके बेटे के वजह से बहुत समस्या में बहुत तकलीफ में थी। 목사님께 찾아와서 그 부인이 간절하게 이야기를 했습니다. और शादीशुदा बहन ने पास्टर से पूछा, 목사님, 제 아들을 좀 도와주십시오. पास्टर कृपया करके मेरे बेटे की मदद करना। 제 아들의 나이가 15살인데 가방에 권총이 있고 마약이 있습니다. वो सिर्फ 15 साल का है लेकिन उसके बैग में वो बंदूक और चरस लेकर घूमता है। 집회 기간 동안 몇 번을 찾아오셔서 간절하게 그 아들의 문제를 이제 목사님께 이렇게 부탁을 했습니다. और सभा में बहुत बार उन्होंने पास्टर से उनके बेटे की समस्या के बारे में चर्चा की।
목사님 이제 한국으로 가셔야 되는데 미국에 계속 계실 수가 없어서 이 학생을 어떻게 이끌어 줘야 될지 이제 생각을 하신 겁니다. तो पास्टर सोच रहे थे कि उनको तो कोरिया जाने और ये लड़का तो अमेरिका में है, तो कैसे इसको मार्गदर्शन करे। 이제 집회가 마쳐지고 한국에 다시 나오실 때 그 학생과 함께 한국에 오셨습니다. और सभा खत्म होने के बाद इस विद्यार्थी को कोरिया में उनके साथ में लेकर गए। 학생이 한국에 같이 목사님을 따라 나올 때 그 학생의 외모는 참 이렇게 재미가 있었습니다. और ये जो विद्यार्थी तो पहली बार जो कोरिया गया तो उसका रूप बहुत ही दिलचस्प था। 머리 색깔은 이제 7색깔쯤 되고요. उसके बाल के ऊपर 7 अलग-अलग कलर रंग थे 이렇게 उसमें। 티셔츠는 한 사람 더 들어갈 수 있을 만큼 큰 티셔츠를 입었고 इतना बड़ा पहना था कि तो दूसरा व्यक्ति भी उसमें शामिल हो सकता था। 그리고 이제 뭐 바지는 이제 거의 엉덩이 절반까지 내려와 있고요. और उसके पैंट जो है जैसे बहुत नीचे से लटक रहे थे। 그리고 이제 바지 기장은 너무 길어서 걸어 다니면 마당 청소가 자연스럽게 됐습니다. और उसके पैंट इतने लंबे थे तो जब चलता चलता स्वाभाविक रूप से वो जमीन को भी साफ करते हुए जा रहा 15살의 이 학생이 이제 목사님 교회에 한 3개월쯤 지났을 때 और ये 15 साल का जो विद्यार्थी 3 महीने के लिए पास्टर के साथ वो चर्च में रहा। 학생에게 많은 변화가 일어났습니다. बहुत सारे बदल हुआ इस विद्यार्थी में। 학생의 아버지는 이제 어머니와 이혼을 했기 때문에 한국에서 살고 ये 계셨는데요. विद्यार्थी का तो पिताजी ने तलाक लिया तो कोरिया में रह 아들이 रहा था। 궁금해서 이제 아들을 만나러 교회에 찾아오셨습니다. और उसके पिता बहुत ही उत्सुक थे अपने बेटे के बारे में सोच के और इसलिए वो चर्च में आए। 아들을 만나고 깜짝 놀랐습니다. और जब वे आके मिले तो वो बहुत 첫 अचंभित हुए। 번째는 그 아이의 변한 외모였습니다. पहले तो उसके बाहरी रूप में बदलाव उन्होंने देखा। 머리 색깔이 이제 검정색으로 돌아온 겁니다. उसका बाल फिर से काला रंग का 그리고 था 티셔츠는 단정해졌고 और उसका टी शर्ट भी बहुत साफ सुथरा था 이제 허리 벨트는 배꼽 밑까지 올라온 겁니다. और पैंट का जो कमर भी जो बेल्ट मार के वो ठीक तरह से बांधा था। 또 내 아들 맞아? क्या सचमुच में तू मेरा बेटा है? 정말 너무너무 이렇게 신기했습니다. वो सचमुच में बहुत ही अद्भुत था। 두 번째 더 놀라운 것은 और दूसरी बहुत ही दिलचस्प बात ये थी कि 아들이 아버지께 하는 말을 듣고 놀랐습니다. और पिताजी बहुत शौक हुआ जो उसके बेटे से ये शब्द सुनते 아버지 저는 행복합니다. हुए। पिताजी मैं सचमुच में बहुत खुश 저는 हूँ। 이제 권총과 마약이 필요 없습니다. मुझे और ड्रग्स की और फिर बंदूक की जरूरत 저는 नहीं है। 이곳에서 예수님의 사랑을 알게 됐습니다. यहाँ पे मैं यीशु के प्रेम के बारे में मैंने सीखा। 아버지도 저처럼 행복하면 좋겠습니다. पिताजी मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे जैसे बिल्कुल वो आप 그 खुश 학생의 रहें। 아버지께서 그 이야기를 들으면서 너무너무 감격스러운 겁니다. और उसके बेटे के शब्द को सुनकर पिताजी के मन को बहुत छू लिया 또 아들을 이렇게 바꿔주신 또 목사님께 너무 감사한 거죠. और वे पास्टर के प्रति बहुत धन्यवादी थे जिन्होंने उनके बेटे को बदल दिया। 목사님께 큰 절을 올렸습니다. एक बहुत बड़ा नमन किया पास्टर को उन्होंने। 목사님 너무 감사합니다. पास्टर बहुत धन्यवाद। 아버지께서 감격에 눈물도 흘리시고요. और उसने जो खुशी के आंसू 학생이 बहाए 이제 몇 개월 더 있다가 미국 LA로 돌아갔습니다. और ये विद्यार्थी पास्टर के साथ बहुत महीने रहे और उसके बाद LA 돌아가서 LA चला गया। 이제 그 교포 사회에 소문이 이제 났습니다. और LA के कोरियन समाज में बहुत तुरंत समाचार फैल गया। 그 학생이 변했어. हाँ वो विद्यार्थी बदल चुका है। 친구들도 처음에 믿어지지 않는 और 거죠. उसके दोस्त पहले तो विश्वास नहीं किया 친구들 야 너 진짜 마약하기 싫어? और उसके दोस्तों ने पूछा सचमुच में तुमको ड्रग्स नहीं चाहिए? 솔직히 말해봐. ए सच बोल 마약하고 싶잖아. तुझे चाहिए सही है? 아니 난 정말 생각이 안 나. नहीं मुझे तो नहीं चाहिए। 이런 변화가 이제 많은 그 부모님들에게도 정말 크게 영향을 끼쳤습니다. और ये बदल जो है दूसरे माता पिता को भी बहुत असर लाए। 그러면서 이제 그 다음 해에 여름 방학에는 28명의 학생들이 한국에 나오게 된 겁니다. और अगले साल 28 विद्यार्थी कोरिया में आए 그들이 또 한 달간 있으면서 마음에 변화를 받았습니다. और वे 1 महीने के लिए रहे और उनके मन में एक बदलाव उन्होंने पाया। 그 LA로 돌아갔을 때 많은 부모님들께서 또 한국에 전화를 해서 너무 감사합니다. 너무 고맙습니다. 내 아이가 변했습니다 하면서 너무너무 기뻐하셨습니다. और जब विद्यार्थी अपने अपने घर गए तो बहुत सारे माता पिता ने फोन करके कहा कि बहुत धन्यवाद मेरा बेटा बहुत बदल चुका है। 그리고 나서 이제 또 그 다음에 여름 방학에 이제 50여 명이 나오고요. और अगले गर्मी के मौसम में एक 50 विद्यार्थी आए 그리고 그 다음에는 이제 100여 명이 나오고 और उसके बाद 100 आए 그러면서 많은 청소년들이 이렇게 변화를 받았습니다. और बहुत सारे युवा ऐसे बदलने लगे 2001년도에는 500여 명이 여러 나라에서 함께 이렇게 모였습니다. और 2001 में
500 विद्यार्थी पूरे दुनिया भर के इकट्ठे हुए थे। 그래서 2001년도에 이제 정식으로 우리 국제 청소년 연합이라는 이름으로 이제 시작하게 됐습니다. और फिर 2001 में हम आधिकारिक रूप से तौर से इंटरनेशनल यूथ फेलोशिप इस संस्था को स्थापित किए। 전 세계 참 많은 분들이 청소년들의 문제 때문에 고민하는 분들이 너무너무 많죠. और युवाओं के समस्या की वजह से पूरे दुनिया में बहुत सारे लोग सोच के दुनिया में गिरे हुए हैं। 또 교회 안에 있는 많은 젊은이들이 이제 교회를 떠나서 세상으로 흘러가는 그런 젊은이들이 굉장히 많습니다. और बहुत सारे युवा चर्च में है लेकिन आखिर में वो दुनिया में लौट जाते हैं। 젊은 일꾼들이 없어서 고민하는 분들이 참 많죠. और बहुत सारे तकलीफ है क्योंकि अभी सुसमाचार के काम के लिए जवान कार्यकर्ता 그러나 नहीं है। 저희들이 이제 이 청소년 단체를 운영하면서 이 젊은 일꾼들이 계속해서 일어나는 겁니다. और हम जैसे ये युवा की जो मिनिस्ट्री करते बहुत सारे युवा बाहर आ रहे हैं। 박 목사님께서 이 우리 청소년 단체를 설립하실 때 요한복음 8장에 있는 그 말씀을 통해서 지혜를 얻으셨다고 이렇게 여러 번 간증하셨습니다. पास्टर ऑक्सुपक ने बहुत बार अपने ये गवाही दी कि यूहन्ना के 8 अध्याय से उनको बुद्धि मिला कि युवाओं को मार्गदर्शन करने 요한복음 के लिए। 8장에 보면 그 간음 중에 잡힌 여자에 관한 말씀이죠. यूहन्ना 8 अध्याय ये व्यभिचार में पकड़ी गई 그 स्त्री के बारे में 여자의 लिखा गया है। 마음은 처음에 그 음란한 마음으로 가득 채워졌어요. शुरुआत में वो स्त्री का मन पूरे वासना से भरा हुआ था। 그러면서 이제 그 마음이 너무 커지니까 결국에는 이제 간음을 하게 됐습니다. और क्योंकि वो मन बहुत बड़ा इसलिए वो आखिर में व्यभिचार में 이제 बदल गया। 어둡고 무섭고 저주스러운 일이 시작됐습니다. अभी वो अंधकार में है, डर में है और न्याय में है। 이제 돌에 맞아 죽어야 하는 것입니다. अभी पत्थर खा के उसको मरना है। 예, 어떤 방법으로든 그 여자는 그 사망의 돌을 피할 수가 없었죠. अभी इस औरत के पास कोई मार्ग नहीं था कि मृत्यु के पत्थर से बचने 누구도 के लिए। 그 여자를 그 죄의 형벌에서 꺼낼 수 있는 사람은 없었습니다. और उसके पापों से बचाने के लिए कोई नहीं था वहां पर। 이 여자 역시도 이제 내가 여기서 돌에 맞아 죽는구나. और उसने अभी सोचा कि अभी मैं यहाँ पे मरने वाली हूँ। 예, 자신의 그 행동과 자신의 그 잘못을 뉘우치고 후회해 보지만 어쩔 수가 없었습니다. और हालांकि उसने भी बहुत पछताया, अपने पिछले कर्मों को याद करके लगा अभी कुछ भी नहीं हो सकता था। 그때 서기관과 바리새인들이 이 여자를 예수님 앞으로 이렇게 끌고 가죠. उस वक्त फरीसी और शास्त्री इस स्त्री को यीशु के पास लेकर आए। 예수님께서 손가락으로 땅에 글씨를 쓰시고 나서 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라고 말씀했어요. और जैसे यीशु ने कुछ लिख के जब उनका लिखना खत्म होता उनके कि जो निष्पाप है तो पहला पत्थर 예수님의 इस औरत को 말씀이 मारे। 이렇게 들려졌을 때 거기 있는 많은 사람들의 마음에 이제 그 말씀이 양심의 가책을 이렇게 가져오게 했습니다. और बहुत सारे लोग उस भीड़ में यीशु के शब्द को सुनकर उनके विवेक बुद्धि में उनको 그들 चुभन हुई। 역시도 뭐 깨끗한 사람 나는 죄가 없어라고 말할 사람이 아무도 없었지 않습니까? उनमें भी आपस में कोई भी जो निष्पाप है वो कभी कोई 그 बोल नहीं 말씀 सका। 한마디가 이 사람들의 손에 들려져 있던 그 돌멩이를 다 땅에 내려놓게 했습니다. और उस शब्द को सुनकर सभी लोगों ने जो उनके हाथों में पत्थर थे नीचे फेंके। 그 돌들이 힘없이 땅에 이제 떨어지면서 और जैसे वो पत्थर एक एक करके नीचे गिरने लगे, 이제 예수님과 이 여자만 남게 सिर्फ 됐습니다. यीशु और ये स्त्री रह गए। 예, 다른 모든 사람들은 하나씩 하나씩 예수님 곁을 떠나갔습니다. सारे लोग वहां से जाने 이제 लगे। 예수님은 이 여인에게 죄의 사함을 말씀하시고 और यीशु ने इस स्त्री को पाप के क्षमा के बारे में कही 이 여자가 거기서 구원을 받습니다. और इस स्त्री ने उद्धार को 이 여자의 पाया। 마음 속에 사망과 두려움과 공포와 정말 절망과 저주가 가득했는데 हालांकि स्त्री का जो मन जो है डर और न्याय से भरा हुआ था, 예수님의 그 말씀으로 말미암아 죄 사함을 받고 생명을 얻게 됐어요. लेकिन यीशु मसीह के शब्द के जरिए उसको पापों के क्षमा और जीवन प्राप्त हुआ। 예, 그리고 이 여자는 이제 일어나서 예수님 곁을 떠나려고 할 때 이 और जब स्त्री जब उठ के जब यीशु को छोड़कर जब वो जा 여자 रही थी, 마음 속에 행복이 가득 채워져 있고 감사가 가득 채워져 있었습니다. और स्त्री के मन में सिर्फ आनंद और खुशी से भरा हुआ था। 그래서 이제 이렇게 돌아가려고 하다가 너무 감사하니까 다시 예수님을 향해서 또 인사를 했겠죠. और मुझे यकीन है जब वो वापस जा रहा था फिर से उसने यीशु को देखा रहेगा, उसका मन बहुत धन्यवादित रूप से था। 예수님 너무 감사합니다. यीशु मैं बहुत धन्यवादित हूँ, 예수님 너무 고맙습니다. यीशु बहुत ज्यादा 여인의 धन्यवाद। 마음 속에는 감사와 행복과 기쁨과 그 마음이 가득 채워진 겁니다. और स्त्री का जो मन है धन्यवादित रूप से आनंद से भरा हुआ था, 여러분 खुशी से 빛이 भरा हुआ था। 가득할 때 이제 더 이상 어둠에 이끌려 가지 않습니다. जब आप पूरा
ज्योति से भरे हुए तो आप अंधकार से आप भरे नहीं रह सकते। 젊은이들이 이제 죄악에 빠지고 어둠에 빠지고 아니면 게임에 약물에 그렇게 빠져 들어가는 것은 다른 게 아니고 आपको पता है कि युवाओं को ड्रग्स में या कि गेम्स में या शराब में गिरने के लिए 예, 그들의 마음 안에 예수님의 사랑과 예수님을 향한 행복과 기쁨과 평안이 가득하면 다른 것을 채울 필요가 없는 것입니다. और अगर उनका मन यीशु से आते हुए शांति और खुशी से भरता तो फिर दूसरे कोई भी चीज में 예, उनको 죄를 मन को 짓지 भरने की जरूरत 마라, नहीं थी। 잘못된 일을 하지 마라, 그 말은 사실 별 의미가 없는 것입니다. और उनको ये कहने के लिए कि पाप मत करो, बुरा चीज मत करो, ये बोलना ये सब 예, 세상에 व्यर्थ 있는 है, 것보다 ये सारे 더 शब्द। 행복한 걸 넣어주고 게임보다 더 즐거운 걸 넣어주면 거기서 자연스럽게 나오는 것이죠. और अगर वे इन युवाओं को गेम से कुछ बेहतर चीज देते या दुनिया से बेहतर चीज देते तो उनका मन 정말 इसमें 전 नहीं 세계 गिरता। 많은 우리 젊은 청소년들이 이제 마음에 이런 예수님의 사랑과 예수님의 행복이 가득 담겨진다면 그들 역시도 변화가 올 것입니다. और पूरे दुनिया के युवा अगर उनका मन यीशु के मन से भरते हैं तो ये वे भी बदल ही सकते हैं। 여러분, 제가 사는 이 한국은 1950년부터 53년까지 3년 आपको 동안 पता है जहाँ पे 전쟁이 मैं 있었어요. जिया, मैं पे रहा हूँ कोरिया में 1950 से 53 तक युद्ध हुआ था। 예, 3년간 전쟁을 하고 나서 많은 해외에서 이제 사람들이 하는 이야기는 한국은 다시는 일어날 수 없는 나라가 될 것이다. 이렇게 말을 했습니다. और ये युद्ध खत्म होने के बाद बहुत सारे देश ने कहा कि कोरिया के बारे में कोरिया ऐसा देश है कभी अभी उभर नहीं सकता। 1954년도에 우리 한국의 지혜 나이는 76달러였습니다. और कोरिया में 1954 में जो जीएन है प्रति मनुष्य 너무너무 $76 था। 가난했죠. कोरिया बहुत गरीब था। 예, 그러다가 이제 우리 한국이 계속해서 경제가 좋아지고 발전하면서 이제 2019년도에는 지혜 나이가 32,000달러가 됐습니다. और तब से जो कोरिया जो बहुत आर्थिक व्यवस्थित है बहुत बढ़ गया और 2019 में वो $32,000 हुआ। 경제가 이제 너무너무 좋아졌지만 हालांकि जो अर्थव्यवस्था बहुत बड़ा हो गया, महान हो 그 गया, 가난하게 살 때는 우리가 밥만 잘 먹어도 너무너무 행복할 거야라고 생각을 했는데 और जब कोरिया गरीबी में था लोगों ने सोचा सिर्फ हमें खाने को अच्छा मिलेगा तो हम 그래 खुश हो 좋은 सकते। 자동차를 타면 얼마나 좋을까 그런 생각을 했는데 उन्होंने सोचा कि कितना अच्छा होगा एक बड़े गाड़ी में घूमने के 근데 लिए। 이제 막상 경제가 굉장히 좋아졌는데 300배 이상의 성장을 가져왔는데 हालांकि अर्थव्यवस्था में 300 गुना अभी बढ़ चुका है, 그러나 결과는 굉장한 문제들이 발생했습니다. लेकिन इसका अंजाम बहुत सारे 예, समस्या है। 우리나라가 이제 G20 국가에도 이렇게 들어갔고 जी हाँ, कोरिया अभी G20 का एक सदस्य है। 예, 정말 그 무역 수출 뭐 이런 부분도 정말 세계에서 이제 뭐 8위권에도 들어갔고 और उसका विश्व व्यापार जो गुण है वो 8 नंबर पे है। 그런데 실제로 이제 자살률이 OECD 국가 중에 1위가 된 겁니다. और जितने भी OECD देशों में कोरिया जो है नंबर 1 पे है आत्महत्या के मामले 예, में। 한국 사람의 행복 지수가 61위 정도 된답니다. और फिर खुशी का जो गुण है वो सिर्फ 61 है। 이제 이혼율은 뭐 OECD 국가 중에 12위까지 이렇게 올라갔고요. और OECD देश में तलाक में 12 नंबर पे है। 예, 세 쌍 중에 한 쌍이 이제 이혼을 한다는 और 거죠. हर एक 3 जोड़े में एक जोड़ा का हमेशा तलाक होता है। 여러분 우리가 경제가 참 좋아지면 और जैसे अर्थव्यवस्था 모든 게 बढ़ता है 좋아질 거라고 생각하지만 हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ बढ़ेगा 경제가 सब में 좋아지니까 सुधार 이제 그 사람들의 욕구가 계속 상승하는 거예요. और जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ता है और लोगों की इच्छा भी बढ़ती 예, है। 특히 경제가 좋아지니까 젊은이들이 이제 욕구가 계속해서 더 빠르게 이제 상승하는 것이죠. और क्योंकि जो अर्थव्यवस्था बढ़ रहा है तो विशेष करके युवा में इच्छा बढ़ते जा रही है। 예, 결국 그 욕구를 이제 자제할 수 없을 때 이제 많은 문제가 시작되는 것입니다. और वे अपने ऊपर उस इच्छा को काबू नहीं कर सकते हो जो 여러분 좋은 समस्या उनके 자동차는 उभर रही है। 빠르게 달려야 되는 그런 부분도 जी 필요하지만 अच्छे गाड़ी को बहुत तेजी से दौड़ने की जरूरत है, 그러나 브레이크가 좋아야겠죠. लेकिन उसके ब्रेक्स भी अच्छी तरह से काम 여러분 करना 어떤 चाहिए। 친구가 좋은 차를 몰고 와서 여러분 집 앞에 차를 대고 빵빵하고 이제 경적을 울립니다. आपका मित्र आपका दोस्त आते आपके घर के बाहर अच्छे गाड़ी में और फिर हॉर्न बजाते हैं, 아 친구 이 차 빨리 타. हे दोस्त अंदर आओ। 차 굉장히 빠르게 달릴 수. और ये गाड़ी जो है बहुत ज्यादा
तेजी 시속 से 있잖아. भाग सकता है। 250km도 더 달릴 수. ये 250 किलोमीटर से भी ज्यादा दौड़ सकती है। 아 그래? हाँ सचमुच में। 그런데 그 브레이크가 오늘 고장이 났어. लेकिन क्या तुम्हें पता है कि आज ब्रेक्स 하지만 टूटे 빨리 हुए हैं। 달릴 수 있잖아. लेकिन फिर भी ये बहुत तेजी से जाता है। 타. चलो आके बैठो। 그럼 여러분 과연 그 차를 तो 타시겠습니까? आप सभी लोग क्या सचमुच में आप अंदर जाके बैठोगे? 아무리 빠르게 달릴 수 있지만 브레이크가 고장 났다면 그 차를 아마 안 탈 겁니다. हालांकि कितनी तेजी से क्यों ना गाड़ी चले, लेकिन ब्रेक्स टूटे तो आप अंदर बैठोगे नहीं। 예, 좋은 차는 브레이크가 반드시 좋아야 합니다. अच्छे गाड़ी को अच्छे ब्रेक्स की जरूरत है। 좋은 마음은 마음에 욕구만 커서는 안 되고 자제력이 있어야 됩니다. और अच्छे मन में सिर्फ आपको इच्छा की जरूरत नहीं, लेकिन आत्म संयम भी चाहिए। 여러분 우리가 전 세계적으로 이제 그 자제력 때문에 자제력을 잃어버려서 많은 문제가 시작되죠. और आत्म संयम के कमी कटी की वजह से बहुत सारे समस्या होते हैं पूरे दुनिया में। 예전에 이런 이야기를 들은 적이 있습니다. एक बार मैंने ऐसे सुना, 예, 아프리카의 어떤 그 한 학교에서 학생들이 선생님 지금 월드컵 축구 경기 하는데 축구 보여주세요. और अफ्रीका के देश में एक वर्ल्ड कप के सीजन में विद्यार्थियों ने कहा टीचर चलो हम लोग गेम देखेंगे। 예, 학생들이 그 뭐 축구를 너무 좋아하니까 보고 싶은 겁니다. क्योंकि विद्यार्थी सचमुच में फुटबॉल देखना चाहते थे और 선생님은 이제 उनको वो 수업 देखना 시간이고 चाहते थे, पसंद है। 하니까 이제 보여줄 수가 없었습니다. क्योंकि उनका क्लास का टाइम था, इसलिए टीचर उनको दिखा नहीं सके थे। 그래 나중에 이제 경기 마치고 재방송 보면 돼. तुम्हें पता है कि मैच खत्म होने के बाद उसका रिप्ले देख सकते हो। 아니에요, 보고 싶단 말이에요. 지금 보여주세요. नहीं, हमें अभी का भी देखने हैं, अभी दिखाओ। 결국 보여줄 수 없었기 때문에 क्योंकि टीचर उनको दिखा नहीं सके, 그걸 진행했죠. वो सिर्फ उसके लेक्चर से चालू 학생이 किए। 이제 밖에 나가서 이제 얼마 후에 그 학교에 불이 났습니다. और एक विद्यार्थी स्कूल को छोड़ा और बहुत जल्दी उस स्कूल को उसने आग 나중에 लगा दी। 조사해 보니까 그 월드컵 경기를 보여주지 않는 것 때문에 너무너무 화가 나고 욕구가 불만이 되니까 학교에 불을 질러 버린 거예요. और क्या हुआ था कि ये विद्यार्थी बहुत दुखी थे क्योंकि टीचर ने उसको गेम नहीं दिखाते, इसलिए स्कूल को ही जला दिया। 그 한 해에는 이제 1년 동안 70개의 학교가 불탄 적도 और 있어요. एक देश में एक साल में 76 स्कूल से भी ज्यादा स्कूल्स को जलाए दिए। 예, 여러분 우리가 마음에서 이제 어떤 원하는 것들이 있죠. और जरूर हमारे मनों में इच्छाएं है, 원한다고 해서 모든 걸 다 가질 수는 없습니다. क्योंकि हमें उसको चाहिए, ऐसा नहीं कि हम उसको ले सकते 예, हैं। 만약에 어떤 사람이 대통령의 자리에 오른다 할지라도 समझो ये व्यक्ति जो है राष्ट्रपति के बहुत 예, करीबी 대통령이 व्यक्ति 된다 है। 해서 자기가 원하는 대로 모든 걸 할 수 있는 건 아니지 않습니까? समझो ये व्यक्ति एक राष्ट्रपति है, जो उनको चाहिए वो सब उनको मिल नहीं 예, 그 सकता। 마음에 이제 그 욕구를 자제할 수 있는 힘을 기르는 것은 굉장히 중요한 것이죠. तो सचमुच में आत्म संयम पाने के लिए आपके मन का प्रशिक्षण होना चाहिए। 이 자제력이 이제 부족한 것 때문에 사회적으로 일어나는 많은 문제들이 있습니다. और आत्म संयम के बहुत कमी घटी की वजह से बहुत समस्या हो रही है समाज में। 어떤 통계를 보니까 이제 미국에서 1년 동안 자제력 부족으로 인해서 이 사망하는 사건들이 계속 일어나고 있는데요. और आत्म संयम के कमी घटी की वजह से मैंने देखा कि समाचार पत्र में बहुत सारे मौतें हो रही है उसके वजह से। 예, 1년 동안 이제 음주나 아니면 또 과음, 여러 가지 약물 아니면 뭐 그 비정상인 섹스 이런 걸 통해서 100만 명 이상이 이렇게 죽는다고 합니다. उन्होंने कहा कि अमेरिका में 10 लाख लोग मर गए, बहुत सारे जो आत्म संयम की कमी घटी की वजह से, सिगरेट पीने की वजह से, शराब पीने की 근데 वजह से 안타까운 것은 और 2차 सेक्स की 세계 वजह से। 대전 때 그 सा망한 미국 군인의 숫자가 42만 명이라고 합니다. लेकिन दूसरे बाजू में अमेरिका जो लोग मर गए थे, जो दूसरे महायुद्ध 2 में 20,000 लोग मरे थे। 예, 이 젊은이들의 그 욕구를 이게 자제할 수 있는 힘을 길러준다는 것은 정말 절대적으로 중요한 것이죠. और हम देख सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है युवाओं को आत्म संयम सिखाने के लिए। 1948년도에 이제 그 벤자민 스포크 박사님이 쓴 책이 있었습니다. और 1948 में डॉक्टर बेंजामिन स्पार्क ने किताब लिखा 예, था। 어린 이제 아기들을 이렇게 교육하는 유아 교육법에 관한 책이죠. वो किताब बाल शिक्षा के ऊपर था। 이 책 내용에 보면은 아기가 울면은 엄마의 젖꼭지를 물려줘라 하는 이런 내용이 있습니다. और उस किताब में ऐसा लिखा था कि जब कोई बच्चा रोता है तो उसे दूध पिलाओ। 이 책이 참 수십 개 나라의 언어로 이렇게 번역이 됐고 굉장히 그 많은 인기를 이렇게 가져왔답니다. और पूरे दुनिया में सबसे उत्तम बिकने 그런데 वाला 이제 किताब बना। 어떤 통계를 이렇게 내본 그 조사를 한번 읽어보니까요. लेकिन इसके बारे में जब मैंने एक लेख मैंने 1948년 पढ़ा, 이후에 출생한 그 미국의 아이들이 이제 성장해서 청소년 기기가 되었을 때
그 시기에 어떤 이 범죄율들이 굉장히 많이 증가했다는 그런 통계를 본 적이 있습니다. और फिर मैंने एक लेख पढ़ा था 1948 के बाद के जितने भी जो बच्चे जन्मे थे वो बच्चे उनके युवाओं में ये किताब आने के बाद बहुत सारे जो उनके समाज में उन्होंने अपराध 이 बढ़ 책에 गए 관한 부분들을 우리 생각해 볼 때 और इस किताब के बारे में जब हम सोचते 물론 हैं 사람마다 여러 가지 다른 측면으로 생각할 수 있겠지만 और जरूर सबके अलग अलग राय हो सकते हैं इसके ऊपर 원래 이제 미국의 사회는 그 청교도들로 말미암아 시작이 됐지 않습니까? और असलियत में अमेरिका जो है क्रिश्चियनिटी के ऊपर स्थापित हुआ था 그들은 정말 이제 영국에서부터 미국으로 건너와서 삶을 시작했습니다. और इंग्लैंड से भागकर वो नया जीवन शुरुआत की अमेरिका 그들은 में 하나님을 경외했고 और परमेश्वर के आदर की 신앙을 중요시 여겼습니다. और उनको लगा कि आत्मिक जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है 교육을 굉장히 중요시 여겼죠. और फिर शिक्षा भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण 그래서 है 집을 먼저 세우기보다는 교회를 세우고 예배당을 세우고 그리고 이제 학교를 지었습니다. और अपने खुद के घर बांधने से पहले उन्होंने चर्च और स्कूल्स को बांधे 예, 삶이 좀 어렵고 그 집이 허술해서 좀 문제가 있었지만 그래도 하나님을 먼저 섬겼고 교육에 마음을 쏟았습니다. हालांकि उनका जीवन बहुत कठिन था और उनका हालांकि जो जीवन की शैली अच्छा क्यों ना हो लेकिन उन्होंने 이제 परमेश्वर 뭐 को 개척 स्थापित किया 시대니까 자녀들을 돌보는 것도 이렇게 쉽지 और 않았습니다. क्योंकि पहला शुरुआत था उनको इसलिए इतना आसान नहीं था अपने बच्चों को बढ़ाने के लिए 그래서 이제 아기 때부터 편안한 어떤 삶보다도 이제 아이들이 엄마를 기다리면서 이제 젖을 먹고 그랬습니다. और उनके बच्चों के लिए एक आसान जीवन से कई ज्यादा उनको इंतजार करना तो उनके माँ बाप के लिए आके 예, इंतजार 아기들이 करने 이제 के लिए 운다고 해서 엄마가 젖을 줄 수 있는 게 아니었어요. और छोटे बच्चों के लिए हालांकि वो रोते हैं तो उनके माँ तुरंत उनको दूध नहीं 예, पिला सकती 시간이 돼야 이제 배가 고프지만 기다렸다가 젖을 먹을 수 있었어요. इसलिए एक समय के लिए उनको रुकना था जब तक वो माँ उनको दूध नहीं पिलाती है 밭에서 일을 하고 농사일을 하고 하다가 이제 집에 와서 아기들에게 또 젖을 주고 했습니다. और माएँ जो है खेत में काम करने के लिए जब तक वो घर पर नहीं आए उसके बाद उनको बच्चों को 예, दूध 아기 पिलाती थी 때부터 자기가 원하는 대로 되지 않는 그런 것이 오히려 아이들에게 굉장히 좋은 그 교육의 효과를 가져온 겁니다. तो वो सचमुच में बहुत अच्छा शिक्षण लगा क्योंकि जो बच्चों को ये बात पता चला कि जो कुछ भी उनको चाहिए उनको 그러다가 नहीं मिलेगा 이제 1948년에 그 유명한 책이 이렇게 나온 거죠. और फिर 1948 में बहुत ही मशहूर ये किताब 많은 이제 아기 बाहर 엄마들이 आया। 아 그렇구나 아기가 울면 얼른 젖꼭지를 물려줘야 되겠다. और बहुत सारे माओ ने ऐसे सोचा हाँ वो सही है जब भी छोटा बच्चा रोता है तो हमें जाके उसको दूध 예, पिलाना 아기들이 है 이제 울음을 바로 그치겠죠. और जरूर बच्चा तुरंत वो अपना 그런데 रोना 이제 그런 बंद कर देगा 부분들을 우리가 조금 더 생각해 보면 लेकिन अगर हम गहराई से और इसके बारे में सोचेंगे तो 이 아이가 이제 기다리면서 자제력을 키우고 또 엄마를 기다리면서 그 인내력을 키우는 그런 부분들은 이제 발달할 수가 없었던 겁니다. लेकिन जब जो बच्चा है माँ का इंतजार कर रहा है तभी वो आत्म संयम हो सकता है उसके अंदर और धीरज भी हो सकता है लेकिन 예, लेकिन 우리가 अभी 그 वो सारे चीज 유대인들이 हो नहीं 이제 सकता 그 자녀 교육에 관한 책이 있는데요. और बच्चों को बढ़ाने के ऊपर यहूदी लोगों ने किताब लिखा था 예, 엄마의 사랑 절반을 감추어라 하는 그런 책입니다. और ऐसा एक कहना है कि माँ के प्रेम को 이 책 आधा 내용에 प्रेम 보면은 को 이제 छुपाओ 엄마가 아이를 향해서 사랑하는 마음이 얼마나 큽니까? और आपको पता है कि एक माँ का जो प्रेम अपने 그 사랑을 अपने 이제 बच्चे के 쏟아 प्रति 붓고 कितना महान 싶은데 है और वो अपना पूरा प्रेम उंडेलना चाहते हैं उस 그 बच्चे को 사랑 이제 절반만 이렇게 쏟고 50%는 감춰라. लेकिन वो किताब कहता है कि आधा सिर्फ वो प्रेम दो बाकी का आधा तुम छुपाओ 예, 그 이제 스포크 박사님의 책 내용과 많이 좀 대조적이죠. और डॉक्टर बेंजामिन स्पार्क्स की किताब से थोड़ा वो अलग है 여러분 청소년들에게 이제 자제력을 길러주는 것은 사실 아주 어린 시절부터 하는 게 좋습니다. और असलियत में युवाओं को आत्मसंयम सिखाने के लिए उनको जवानी से उनको सिखाना है 예, 자기가 원하는 것이 10가지라면 अगर उनको 10 चीज चाहिए तो 예, 일부러라도 3가지, 4가지는 이렇게 부모가 들어주지 않는 게 좋은 겁니다. और जानबूझकर माता पिता 3 या 4 उनके चीजों को सुनना नहीं चाहिए 요즘에 한국의 청소년들도 문제가 심각하죠. इन दिनों में कोरिया में युवाओं की समस्या बहुत बढ़ रही 이제 है 경제가 좋아졌기 때문에 아이들이 원하는 거, 갖고 싶은 거 그걸 다 가질 수 있는 겁니다. क्योंकि अर्थव्यवस्था बढ़ चुकी है इसलिए बच्चों को जो चाहिए उनको मिल सकता है 굉장히 이제 자유로워 보이고 굉장히 좋아 보이지만 반면에 और 절제력을 हालांकि बाहरी रूप से 잃어버리고 दिखाने के 있습니다. लिए अच्छा दिखता है लेकिन दूसरी बाजू में वे योग्यता वो गवा बैठते हैं आत्मसंयम को पाने के लिए 청소년들에게 많은 문제가 이렇게 찾아온 겁니다. और बहुत सारे समस्या इस युवाओं में आते हैं 우리가 이제 자제력을 키워가고 또 사고력을 길러가는 게 굉장히 중요한데요.
और ये महत्वपूर्ण है हमारे जो योग्यता को आत्म संयम पाने के लिए और गहराई 사실 से सोचने के 요즘에는 लिए। 이제 삶이 굉장히 이제 그 복잡하고 다양합니다. लेकिन इन दिनों में हमारा जो जीवन बहुत ही गड़बड़ा गया है और बहुत ही 차분하게 이제 विविध है। 생각을 깊게 할 수 있는 그런 기회들이 많지 않고요. हमारे पास ज्यादा संधि नहीं है बहुत गहराई से उसके बारे में 그러다 सोचने 보면 के 이제 लिए। 즉흥적인 생각을 하고 즉흥적인 행동을 해버리는. हम आवेग में सोचते हैं और आवेग में ही वैसे कार्य करते 여러분 हैं। 특히 이제 스마트폰이 발달하고 그리고 TV, 영상물이 지금은 굉장히 이렇게 다양하고 발달이 되어 있습니다. और विशेष करके सेलफोन टीवी और वीडियो के जैसे ये विकास हुआ इसमें 예, 그런 이제 많은 부분들이 발달하면서 청소년들이 이렇게 깊게 사고하는 부분들을 많이 잃어버려 가고 있습니다. इस सारे चीजों में विकास होने की वजह से युवा गहराई से वो TV를 सोच 만든 नहीं सकते। 사람들은 그 TV를 보면서 바보 상자라고 이렇게 और 말한답니다. जिन लोगों ने टीवी को बनाया वो इडियट बॉक्स करके उसका नाम बुलाते हैं। 예, TV를 보고 있으면 누구든지 쉽게 이해를 하지만 깊이 사고하고 생각할 수 있는 그런 기회를 갖지는 못합니다. और जो कोई भी टीवी देखते हैं आसानी से उसको पता चलेगा उन अंदर क्या चल रहा है लेकिन गहराई से वो सोच नहीं सकते। 그래서 이제 이 삶이 복잡한 것보다 삶을 단순하게 했을 때 또 생각을 이렇게 깊게 할 수 있는 기회를 많이 얻을 수 있다고 합니다. और जब आपके जीवन को आप सरल बनाते हो तो आपके पास और संधि मिलते हैं और गहराई से सोचने के लिए। 많은 사람들이 이제 어떤 사회 일들을 하면서 전문적인 부분에 그 사고가 굉장히 필요하기 때문에 그런 걸 위해서 이제 삶을 단순하게 만들어 간답니다. और बहुत सारे लोग जब सोसाइटी समाज में रहते हैं सचमुच में वे अपने जीवन को सरल बनाते हैं। 예, 한 번은 이제 어떤 제가 신문 기사에서 एक 봤는데 दिन मैंने एक समाचार 그 पत्र पढ़ा 페이스북의 창업자 마크 저커버그에 관한 그런 기사였습니다. और वो जो फेसबुक का जो संस्थापक था 예, 그런 मार्क 이제 जकरबर्ग के बारे 그 में 옷장을 열어보면 옷이 똑같은 옷들이 이렇게 단순하게 걸려 있습니다. जब आप उनके कपट को खोलेंगे तो आप लोग कि उनके वही कपड़े 어떤 हैं। 뭐 옷의 취향이라기보다도요. शायद उनका वो स्टाइल नहीं 예, है 어떤 삶을 단순하게 해서 한 분야에 깊이 그 생각을 몰두하기 위해서 이렇게 삶을 단순하게 만들었다고 लेकिन 합니다. उनके सोच को और आगे बढ़ाने के लिए बाकी हर चीजों में उन्होंने बहुत ही सरल रखा उनके जीवन को। 예, 그 스티브 잡스라고 하는 애플사를 창업하신 분 역시도 그 옷을 입는 거 보면 거의 같은 옷을 입고 이렇게 강연도 하고 다닌다고 합니다. और हम स्टीव जॉब के बारे में जो सोचेंगे जो एप्पल के जो संस्थापक वो भी एक ही जो कपड़े हमेशा 예, पहनते हैं। 사람들이 이렇게 단순한 그 삶 속에서 이제 어떤 한 분야에 더 깊이 사고하기 위해서 많은 노력들을 하고 있습니다. और ये सारी चीज उनके जीवन में बहुत सरल रखते हो ताकि वो दूसरे चीजों के ऊपर ध्यान 그 दें। 사고력을 우리 젊은이들이 키워간다면 정말 많은 일들을 해낼 수 있습니다. और अगर हमारे युवाओं को वो योग्यता बढ़ा सकते हैं सोचने के लिए तो आगे बहुत सारे काम कर सकते हैं। 시카고 대학에 관한 이야기를 그 한번 들은 적이 있는데요. मैंने शिकागो यूनिवर्सिटी के बारे में सुना था। 1890년대에 그 대학이 설립이 됐습니다. वो 1980 में स्थापित हुआ था। 근데 이제 그 5대 다섯 번째 총장으로 오늘 로버트 허친스라는 총장이 부임을 하셨는데 और पांचवा जो कुल अधिपति रॉबर्ट हचिन्स है 그럼 굉장히 젊은 총장님이었어요. वो बहुत ही जवान 그가 대학 कुल अधिपति 총장으로 थे। 부임하면서 이제 시카고 플랜이라고 하는 프로그램을 이렇게 제안을 했습니다. और जब वो वहाँ के अधिपति थे उन्होंने सोचा था कि शिकागो प्लान शुरू करने के लिए 예, 이 시카고 플랜은 이제 4년 동안 대학을 졸업하기 전에 고전 문학 100권 이상을 읽는 것입니다. और ये शिकागो प्लान ये था कि आप जो है 100 जो है क्लासिकल साहित्य पढ़ना था आपके ग्रेजुएशन के 처음에 पहले। 이제 학생들이 막 불만이 대단했습니다. और पहले तो ये विद्यार्थी बहुत शिकायत से भरते थे 학과 공부하기도 굉장히 어려운데 और उनके जो एकेडमिक जो पढ़ाई से 어떻게 बहुत 4년 कठिन 동안 था 고전 ये 문학 100권을 읽어? 이거 말도 और 안 돼. 4 साल में 100 क्लासिकल साहित्य कैसे पढ़ सकते हैं हम इसको। 고전 문학 책은 어떤 그냥 소설하고 좀 달라요. और ये क्लासिकल साहित्य 굉장히 딱딱한 책이죠. It's a- उपन्यास से बहुत अलग था। ये 이제 बहुत ही 그걸 막 읽어야 하니까 बहुत ही 학생들이 कठोर 너무 부담스럽고 힘든 किताब 겁니다. था। अभी ये किताब पढ़ने के लिए बहुत ही बोझ लग रहा था उनको। 1년이 지나고 2년이 지나고 3년이 지나고 계속 총장님은 시카고 플랜을 이제 이렇게 밀어붙였습니다. और 1 साल 2 साल 3 साल लगातार वो कुल अधिपति शिकागो प्लान के लिए वो बता 참 रहे थे। 이제 놀라운 어떤 변화가 왔다고 합니다. लेकिन हम देख सकते हैं एक बदल हो सका था वहाँ पर। 캠퍼스 안에 학생들의 이제 분위기가 아주 진지해지고 그들이 앉아서 토론을 하고 사고를 하고 묵상을 하는 그런 시간들을 많이 갖기 시작했다. हम देख सकते थे कि उस कैंपस का जो माहौल बदल गया। विद्यार्थी बहुत ही
और ईमानदार बन गए और वे संयम बन गए और 예, प्रलोभक बन 그러면서 गए। 이제 이 시카고 대학이 명문 대학으로 이제 이렇게 변화가 왔는데요. इसलिए वो शिकागो जो बहुत ही 예, 통계 उन 자료를 स्कूल 이렇게 का 확인해 नाम 보면 बहुत हो चुका था। जब 그 उसके डेटा 시카고 को देखेंगे 대학을 졸업한 졸업생들이나 그 대학에서 교수로 활동하셨던 분들 중에 그 노벨상을 수상한 사람이 그동안 92명이 된다고 합니다. और वो जो पूर्व छात्र और जो संकाय जो स्कूल में काम किए वो 92 नोबेल पुरस्कार विजेता थे। 예, 이런 이제 그 많은 성과들은 사고력이 깊어지면서부터 이렇게 가져올 수 있었다고 합니다. और वे इस चीज को हासिल कर सके थे क्योंकि उनके पास ये योग्यता थी गहराई तक 그런 सोचने के लिए। 사고력을 길러가는 부분들 굉장히 중요합니다. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे योग्यता को हम बढ़ाए सोचने 전 के 세계 लिए। 이제 유대인들은 인구의 0.2% 정도를 차지한다고 और 합니다. यहूदी जो संख्या पूरे दुनिया में सिर्फ 0.2% है पूरे दुनिया 근데 भर 그 में। 노벨상을 수상한 사람들의 그 이제 비율을 따져 보면은 22.5%를 이제 차지하고 있다고 합니다. और लेकिन पूरे दुनिया में देखेंगे जो यहूदियों के बीच में 22.5% है। 작은 인구인데 엄청나게 많은 사람들이 노벨상을 수상하는 것입니다. वे एक छोटा प्रतिशत है पूरे दुनिया में, लेकिन वो बहुत है जो इसने नोबेल प्राइज जीते हैं। 예, 이런 이제 부분들을 가지고 올 수 있는 것 역시도 사고력이나 또 창의력이나 어떤 분야에서 이제 앞서가는 그런 생각 때문에 이제 이런 많은 업적을 이제 낼 수 있다는 것이죠. और वे ऐसे अंजाम दिखा सकते थे क्योंकि उनके पास वो क्षमता था गहराई से 많은 सोचने के लिए। 사람들이 유대인의 그 교육법에 관한 얘기를 하고 있습니다. और बहुत सारे लोग ये यहूदी कैसे शिक्षा देते 그들의 हैं उसके 이제 बारे में बातें 교육법은 करते 5천 हैं। 년 동안 질문과 토론하라라는 그 한 단어로 이렇게 함축할 수 있다고 합니다. और उनके जो आप संक्षेप में वो कैसे सिखाते हैं, आप बोल सकते हैं कि कैसे वो 예, पूछते 서로 और कैसे बहस करें। 질문하고 또 토론하면서 이제 많은 부분이 이제 발달하기 시작합니다. और वो एक दूसरे को प्रश्न पूछते हैं और बहस भी होता है। इस प्रकार से उनके पास योग्यता है सोचने 예, के लिए 한 번은 गहराई 이제 से। 어떤 기사에서 읽어보니까 एक दिन मैंने एक लेख पढ़ा था 유대인들이 이제 13살에 성인식을 하는데 और 13 वर्ष की उम्र में जो यहूदी जो बच्चे हैं उनका उम्र होती है 그 성인식을 통과하려면 그 모세 오경을 다 암송을 해야 और की 한다. उम्र जो है वो उस उम्र में आने के लिए उनको मूसा के 5 किताब को पढ़ना होता है। 그 기사를 읽을 때 깜짝 मैं 놀랐어요. बहुत अचंभित हुआ वो जब मैंने सुना। 창세기 1장도 외우기가 쉽지 않은데 It's और बहुत ही कठिन है उत्पत्ति का एक अध्याय को भी याद 모세 करना, 오경을 다 암송한다고 하니까 लेकिन उनको मूसा के सारे 5 किताब को उनको याद करना होता 아주 है। 이제 어렸을 때부터 계속해서 이 성경을 암송하기 और 시작합니다. बहुत जवानी के दिनों से वे याद करने की कोशिश करते हैं 예, इस किताब को। 그러면서 이제 이 뇌의 구조가 그 3D로 이렇게 변화가 온다. और उनका जो दिमाग का जो स्ट्रक्चर जो है एक 3D स्ट्रक्चर 그래서 में बदल जाता है 입체적인 사고를 하도록 그 뇌의 구조가 이렇게 변형이 온다. and और उनका दिमाग इस तरीके से होता है कि वो गहराई से बहुत ज्यादा सोच सकते 평범한 हैं 사고에서 이제 아주 그 더 한 단계 뛰어난 사고력을 और 갖게 된다. सोचने के साधारण योग्यता से एक योग्यता ऊपर जाते हैं। 그들이 끊임없이 이제 성경을 암송하고 अंत तक वो बाइबल को याद करने की कोशिश 또 करते हैं 성경을 중얼중얼 읽어가고 और लगातार वे वचनों को वो पढ़ते हैं। 아주 어린 시절부터 이제 그런 그 암송을 하기 시작하면서부터 많은 부분에 이렇게 좋은 변화들이 온다. और जैसे बाइबल को वो याद करते हैं हम देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से बदलाव उनके जीवन में होते हैं। 예, 그러면서 전 세계 많은 이제 그 앞서가는 일들 속에 유태인들이 그 차지하는 비율이 굉장히 और हम 커져 देख 있다고 सकते हैं 합니다. इसलिए बहुत सारे यहूदी समाज बहुत सारी चीजों को वो मार्गदर्शन कर रहे अगुवे हैं। 여러분 사고력을 키워가는 이런 여러 가지 교육에 관한 부분들을 지금 이야기를 해봤는데 और आज मैं बात कर रहा हूँ कि वो रास्ते कैसे हम गहराई से सोच सकते हैं। king 저는 이제 성경에 있는 말씀들을 또 한번 생각해봤습니다. और मैंने बाइबल के वचनों के बारे में भी मैंने 성경에 सोचा 그 누가복음 16장에 보면 불의한 청지기가 있습니다. और वचनों में लूका के 16 अध्याय में चतुर भंडारी के बारे में लिखा है। 불의한 청지기는 그 생각이 굉장히 짧은 사람이었습니다. और ये चतुर भंडारी बहुत चतुर था उसके सोच में। 주인의 재산을 관리하는 청지기면서 हालांकि अपने मालिक के भंडारों को वो संभाल 주인의 रहा था, 어떤 마음을 살피지 않았습니다. लेकिन अपने मालिक के बारे में उसने नहीं सोचा। 주인이 이걸 기뻐할까 이런 삶을 싫어할까 이런 걸 계산하지 않았습니다. उसने कभी गिनती नहीं की कि मालिक इससे खुश होगा या कि आनंदित होगा। 그냥 뭐 자기의 어떤 생각을 따라 살았어요. वो सिर्फ अपने सोच के नीचे वो 그럼 रह गया। 그냥 자기 뭐 원하는 대로 자기 판단대로 그냥 시간을 보냈습니다. और उसका समय उसने जैसा वो चाहता है अपने न्याय के अनुसार वो जिया। 주인이 볼 때 굉장히 불편했습니다. और इससे वो मालिक बहुत ज्यादा 그날 주인이 그 उसको 청지기 बहुत तकलीफ हुई। 불러서
और एक दिन मालिक ने उस भंडारी 이제 को बुला लिया 네가 하던 일을 셈해라. और अभी तुम्हारे भंडारीपन का लेखा दो मुझे। 더 이상 주인은 이 사람 쓸 수가 없다는 거죠. और मालिक कहता है कि अभी और मैं इस्तेमाल नहीं कर सकते इसको। 근데 참 신기한 것은 बहुत ही अद्भुत चीज हुआ वहाँ पे। 그때 이 사람이 갑자기 생각이 막 깊어지는 거예요. उस वक्त ये आदमी सोचने लगा, 이제 내가 여기서 쫓겨나면 어떻게 되지? अगर यहाँ से मुझे बाहर फिकवा दिया तो क्या होगा। 예, 이제 사고를 하기 시작했습니다. और फिर वो सोचने लगा, 생각해 보니까 나가서 땅을 파자니 힘이 없었고 और अगर बाहर जाके खोदने लगा तो उसके पास अभी सामर्थ्य 사람들에게 नहीं है 막 이렇게 빌어 먹으려고 하니까 부끄러운 겁니다. और भीख मांगने के लिए उसे बहुत लज्जा आती है। 그럼 내가 여기서 뭘 해야 될까? तो अभी मैं क्या करूँ यहाँ पर, 이쯤에서 뭘 해야 되지? और इस पल में मैं 아, क्या 내가 할 करूँ। 일을 알았어. हाँ, अभी मुझे पता चला। 그러면서 이 사람이 그때부터 이제 그 빚진 자들을 찾아다녔어요. और तब से वो उन लोगों को ढूंढने लगा जिसके पास कर्जा था, जिसके ऊपर कर्जा 그러면서 था। 아 기름 그 얼마나 빚졌어요? और कितना कर्जा तेल है तुम मालिक को देने 네, के लिए। 제가 100말 빚졌습니다. और 100 बोतल, 그럼 50이라 써. ठीक है, सिर्फ 50 लिख दो फिर। 또 얼마 빚졌어요? और तुम्हारे बारे में क्या है। 다니면서 이제 그 사람들의 빚을 막 탕감해 주는 일을 했어요. और उनके कर्जे को 왜냐면 फेरने के 이렇게 लिए 해야 वो 자기가 वहाँ पे 쫓겨났을 उनके 때 पास 이들을 गया। 찾아가면 이들이 자기를 영접할 거라는 생각을 한 क्योंकि 겁니다. उसको पता चलेगा अगर उसको बाहर मालिक उसको निकाल देता है तो अगर उनके पास गया तो उसको मदद मिलेगी। 그때 주인이 그 불의한 청지기 하는 일들을 보면서 और उस वक्त मालिक ने इस चतुर भंडारी के कामों को देखा, 굉장히 이게 기뻐한 겁니다. वो बहुत खुश हो गया। 청지기가 이제야 일을 지혜롭게 하네. Now, अभी वो बहुत ही बुद्धिमानी रूप से काम कर रहा है। 저는 이 성경을 이렇게 생각해 보면서 when I जब मैंने बाइबल के बारे में 이 सोचा, 불의한 청지기가 정말 사고하지 않는 사람이었거든요. ये चतुर भंडारी ऐसा व्यक्ति था जो कभी बिल्कुल सोचा नहीं, 그냥 자기 마음 안에서 살았죠. वो सिर्फ अपने खुद के मन अपने सोच 근데 में 이제 जिया। 주인의 그 말씀을 들으면서 लेकिन जैसे वो मालिक का शब्द को सुना 주인과 대화하면서 और जैसे उसने मालिक से बातें की 마음이 그 속에 이렇게 흘러 और 들어오면서 जैसे मालिक का मन उसके मन के अंदर बहा 이 청지기의 마음에 변화가 और इस 옵니다. चतुर भंडारी के मन में एक बदलाव आया। 청지기가 이제 미련했는데 और 지혜로워지는 वो एक 겁니다. मूर्ख था लेकिन अभी वो बुद्धिमान बन गया। 청지기가 생각이 없는 사람이었는데 갑자기 생각이 깊어지는 겁니다. वो ऐसा व्यक्ति था तो बिल्कुल सोचता नहीं था, लेकिन अभी वो गहराई से सोच रहा है। 예, 세상에 많은 사람들이 사고력을 좋게 하기 위해서 많은 일들을 하고 많은 연구를 하고 많은 교육을 하지요. जी हाँ, इस दुनिया में बहुत सारे लोग जो है बहुत गहराई से कैसे सोचे और आत्मसंयम कैसे करे इसके बारे में वो खोज कर रहे हैं। 저는 이제 목사니까 이 성경에서 그런 걸 생각해 봤을 때 लेकिन और चूंकि मैं एक पास्टर और मैं गहराई से जब मैं इसको 여러분 세상에 सोचता हूँ, 많은 지혜와 세상에 많은 좋은 교육법이 있지만 जी हाँ, इस दुनिया में बहुत सारे महान जो शिक्षण है 그러나 이 सीख सकते हैं। 성경보다 더 완벽하고 성경보다 더 지혜로운 그 책은 없습니다. लेकिन बाइबल की तरह परिपूर्ण और बुद्धिमान किताब कहीं नहीं है। 오늘 읽었던 이 디모데후서 처음 읽었던 본문 말씀처럼 जैसे दूसरे तिमोथेयो के उस शब्द 예, को 이 हमने आज पढ़ा, 디모데후서 3장 그 16절에 이렇게 돼 있습니다. तीसरा अध्याय के 16 वचन में लिखा है, 예, 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기에 유익하니 वो कहते हैं संपूर्ण पवित्र शास्त्र प्रेरणा परमेश्वर की प्रेरणा में रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। 17절에 이는 하나님의 사람을 온전케 하며 모든 선한 일을 행하게 온전케 하려 함이니라. 17 वचन, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध रहे और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। 여러분 성경 자체가 이제 하나님의 감동으로 된 것입니다. और बाइबल जो है परमेश्वर के प्रेरणा से लिखा 그래서 गया है 교훈이 들어있고 책망이 들어있고 바르게 함이 들어있고 의로 교육하기에 너무너무 유익하다는 거예요. और सब कुछ है, उपदेश और समझाने सुधारने और धर्म का शिक्षा भी। 예, 하나님의 말씀을 들을 때 그 और जब हम परमेश्वर के शब्द को 말씀은 सुनते 빛이기 हैं 때문에 क्योंकि वो ज्योति है, 말씀이 마음에 비춰지면서 और जब ज्योति आपके मन में चमकता 예, है, 우리 마음을 책망해 주고 जी हमारे मन को सुधारता है, 우리 마음에 교훈을 주고 वो हमें आदेश देता है 우리 마음을 이제 의의 세계로 이렇게 이끌어 간다는 겁니다. और हमें धार्मिकता के दुनिया में हमारे मन को चलाता है। 그래서 하나님의 사람을 온전케 하고 और वो मनुष्य के परमेश्वर के मन 이 मनुष्य को 정말 परिपूर्ण 하나님의 बनाता 일들을 है 하기에 부족함이 없도록 만들어 준다는 거죠. और उसको ऐसे बनाता है ताकि वो परमेश्वर का काम करने के लिए कुछ भी कमी घटी नहीं होती है। 예, 정말 이 성경 말씀이 우리 젊은이들의 마음속에 흘러 들어갈 때 और जब बाइबल के शब्द युवा के मन में बहता है, 그들이 변하는 것을 우리는 많이 보았어요. हम देख सकते हैं उनको बदलते 예, हुए। 어떤 세상에 좋은 많은 그 교육법보다도 इस दुनिया की शिक्षा की व्यवस्था से कई ज्यादा 하나님의 말씀을 마음에 이제 넣어줄 때 जब उनके मन में परमेश्वर के शब्द को जब हम डालेंगे
하나님의 말씀을 펴놓고 대화할 때 जब परमेश्वर के शब्द को खोल के उनके साथ बात करेंगे आप, 그 말씀들이 청지기의 그 미련함을 벗겨주는 것처럼 जैसे उस शब्दों ने उस चतुर भंडारी को उसके मूर्खता को उसको बताया, 생각 없는 청지기를 생각이 깊은 사고하도록 만들어주는 것처럼 और जैसे ये वचन ने उस जो भंडारी को बदल दिया जो कभी उसने सोचा नहीं था, 젊은이들에게 그런 변화가 온다는 것입니다. ऐसे बदलाव हमारे अंदर भी आएगा। 성경보다 더 놀라운 책은 없습니다. बाइबल से दूसरा कोई बढ़िया 말씀보다 더 कोई 위대한 किताब नहीं 교육은 है, 사실 없습니다. और वचनों के शब्दों को छोड़कर दूसरा कोई भी शब्द 열왕기하 नहीं है। 5장을 읽어보니까 जब हमने दूसरा राज्य का 5 अध्याय पढ़े, 예, 거기 나만 장군이 वहाँ 있습니다. पे नामान सेनापति 나만 है, 장군은 이제 문둥병 때문에 사실 그는 인생이 다 이제 무너지는 거죠. और उसके कोड़ के वजह से उसके पूरा जीवन उसका बहुत 그는 ही 큰 दयनीय था। 용사였고 वो आरामी दल का एक 시리아의 सेनापति था, 장군으로서 बहुत शक्तिशाली था, 많은 사람의 존경을 받았지만 और बहुत सारे लोगों ने उसका 그 आदर किया था, 문둥병 때문에 그의 인생이 다 무너지게 된 लेकिन 겁니다. उस कोड़ के वजह से उसका पूरा जीवन तहस में हुआ था, 하나님이 그를 불쌍히 여겨서 और परमेश्वर ने उसके पर दया किया, 그 집에 이스라엘 작은 계집 아이가 포로로 잡혀오죠. और उसके घर में इजराइल से एक छोटी सी बंधुआई लड़की थी, 그 작은 계집 아이 마음 안에 있는 믿음과 소망이 और उस बंधुआई की लड़की के मन के अंदर के आशा और 이 विश्वास 나만 को, 장군을 이제 이스라엘 사마리아의 그 엘리사 선지자의 집 앞에까지 가도록 이끌어 줍니다. और ये जो है सेनापति नामान को एलिशा के घर तक लेकर गए। 근데 이제 그 성경 읽어보면 अगर हम वचनों को हम 나만 पढ़ेंगे 장군이 문둥병을 고치고 싶어서 소망을 가지고 갔지만 तो जी हाँ, सेनापति नामान एक आशा से गए कि ताकि उसके कोड़ ठीक हो जाए, 엘리사 집에 도착했을 때 자기 생각하고 맞지 않았습니다. लेकिन जब वो एलिशा के घर में पहुंचा, कोई भी चीज उसके 자기 생각에는 소치고, 엘리사가 나와서 उसको 상처에 소치고 손을 मेल-मिलाप नहीं 흔들고 기도하면서 문둥병을 고쳐줄 거라 생각했는데 He उसको लगा था कि एलिशा उसके घर से बाहर आएगा, अपना हाथ फैला के उसके लिए प्रार्थना कर, उसके कोड़े के लिए। 엘리사 선지가 나온 게 아니고 그 종이 나와서 이야기하죠. लेकिन एलिशा भी बाहर नहीं आया, उसका नौकर बाहर आया। 요단강에서 7번 씻으면 आसिफ 깨끗해집니다. अगर तुम यरदन नदी में 7 बार जाके डुबकी मारते हो तो तुम साफ हो जाओगे। 그 자기 생각하고 안 맞으니까 나아만이 화가 났습니다. और उसके सोच को वो मिला नहीं, इसलिए वो नामान 분을 बहुत 냈습니다. गुस्से में था 그리고 और वो 돌아가려고 했어요. वापस अपने देश चला जा रहा था। 다메섹강 아바나 바르바는 더 깨끗지 않냐? क्या दमस्क की और परपर की नदी और साफ सुथरा नहीं है 그러면서 क्या? 돌아가려고 할 때 और वापस वो जा रहा था। 이제 누구도 그 생각을 이게 뭐 잡아줄 자가 없었다면 उस वक्त अगर कोई उसको पकड़ता नहीं था 나만은 너무너무 이제 불행한 곳으로 갔겠죠. तो नामान सचमुच में दयनीयता में गिर सकता। 참 लेकिन 놀라운 अद्भुत 것은 चीज बात ये थी, 옆에 있는 종들이 이야기합니다. उसके इर्द गिर्द के नौकरों ने कहा, 장군이 सेनापति 조심스럽게 말했어요. मुझे यकीन है बहुत ही संभाल के बोला, 장군님이 화가 났어요. क्योंकि वो सेनापति बहुत ही दुखी है। 그래 더 어려운 일도 더 큰 일도 하라고 하면 하실 텐데 सेनापति, क्या आप कोई बड़ा काम नहीं करते? अगर आपको कहा गया तो 땅강에 가서 7번 씻으면 깨끗해진다고 하는데 그게 뭐가 어렵겠습니까? What's- क्या ही कठिन है कि यरदन में जाके 7 बार डुबकी 그동안 मार गए। 더 어려운 일도 하지 않았습니까? इसके पहले कुछ कठिन काम आपने कभी किया नहीं था क्या? 말씀대로 하시면 अगर आप 깨끗해집니다. इस शब्द के अनुसार किया तो आप शुद्ध हो जाओगे। 예, 종들이 어떤 이야기를 뭐 했는지 자세한 이야기는 기록돼 있지 않죠. और हालांकि ये सही और साफ तरीके से लिखा नहीं है 단순하게 말씀이 기록돼 있지만 नौकरों के बारे में, 놀라운 것은 종들이 들려주는 그 마음이 나하만 장군의 생각을 완전히 바꿨습니다. लेकिन अद्भुत बात यह है कि नौकरों के शब्द ने नामान के मन को पूरी तरह से बदल 자기 दिया। 생각에서 하나님의 말씀편으로 그 생각을 바꾸게 됐습니다. उसके खुद के सोच से फेरकर परमेश्वर के शब्द के पास गया। 자기에게서 벗어나게 해줬어요. वो अपने आप से आजाद हुआ 종들과 대화하면서 और जैसे अपने नौकरों के साथ उसने 종들의 बातें की, 말씀이 그를 거기서부터 생각을 전환시켰습니다. और उसके नौकरों के शब्द ने उसके मन को बदल दिया। 많은 사람들이 사고가 전환돼야 한다 이런 얘기 하죠. और बहुत सारे लोगों ने कहा कि हाँ, तो आपके सोच 많은 बदल 사람이 गए। 자기에서 벗어나야 한다고 이야기합니다. और बहुत लोग हैं कि आप अपने आप से आजाद हो 그래서 चुके हैं। 많은 좋은 방법들을 내놓습니다. और ये बहुत सारे तरीके लाते करने के लिए। लेकिन मैं 저는 आपसे 분명하게 एक 말씀드릴 수 있는 But what 것은 I कह सकता हूँ ये है, 예, 하나님의 말씀보다도 더 우리 사고를 바꾸기에 좋은 건 없습니다. ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जो हमारे मन को बदल सकते हैं बिना परमेश्वर के शब्द से। 젊은 청소년들에게 소망을 가지고 말씀을 심을 때 और जब आपके पास आशा है और युवा के मन में शब्द को जब 젊은 आप 우리 डालते हो, 일꾼들에게 젊은 청소년들에게 하나님의 말씀을 통해 하나하나 마음의 세계를 이끌어 줄 때 और परमेश्वर के शब्द से उनके मनों को जब चलाते हो, 예, 그들은 변하고 달라지는 것입니다.
आप देख सकते हैं कि वो लोग बदल 예, चुके हैं। 미국에 그 처음에 개척을 할 때 आपको पता है कि जब पहली बार उन्होंने अमेरिका को स्थापित 그 किया, 야생마를 교육하는 일들이 있었습니다. वहाँ पे एक काम था कि जंगली 예, घोड़ों 그 को 이제 말을 어, 이용해서 ट्रेन करने के 미국이 लिए। 많은 이제 개척의 길들을 열어갔지 않습니까? और उन घोड़ों की वजह से अमेरिका वो स्थापित हो 근데 सका। 그 말들이 훈련된 말이 아니었고 लेकिन पहले से उनको शिक्षण नहीं दिया गया था। 야생마들이었죠. शुरुआत में सिर्फ जंगली घोड़े ही थे 야생마 길들이는 게 굉장히 어려웠다고 और 합니다. बहुत ही कठिन था ये जंगली घोड़ों को संभालने के लिए, 그러나 이 ट्रेन करने के 주인이 लिए। 의지를 가지고 끝까지 그 야생마의 그 야생마의 본능을 이제 길들여 갔습니다. लेकिन जो मालिक जो है लगातार इस जंगली घोड़े को वो प्रशिक्षण देने के, 이렇게 올가미를 걸어서 이제 던지고 वो रस्सी जो है वो घोड़े के ऊपर डालने के, 이렇게 그 목에 걸리지 और 않죠. जरूर वो सीधा उनके गले में जा 예, सकता 또 था। 이제 던지고 또 던지고 फिर से डाल के, 씨름을 하고 फिर से ऐसा कोशिश 싸움을 करके, 하고 लड़ाई करके, 그런 이제 과정을 거쳐서 이제 그 야생마들이 거칠었는데 이제는 주인을 잘 따르게 됐습니다. और आखिर में ऐसे प्रशिक्षण करके आखिर में जो जो जंगली घोड़ा वो मालिक को 그래서 सुनने 이제 लगा। 수천 킬로를 이제 그 말을 이용해서 다니면서 이제 그 나라들을 이제 개척하고 건설한 일을 했죠. और उस घोड़ों की शक्ति से वो बहुत लंबा जाके वो स्थापित कर 요즘 सके 젊은 थे। 청소년들 꼭 야생마 같은 그런 모양이 जी हाँ, 있습니다. आज के युवाओं के पास उस जंगली घोड़े की एक रूप है। 그러나 말씀을 가진 그 인도자들을 만났을 때 लेकिन जब उनके अगुवे को जो मिलते हैं, जिनके पास परमेश्वर के 이 शब्द है, 성경을 마음에 품고 있는 하나님의 사람을 만났을 때 और जब वे परमेश्वर के जन को मिलते हैं जिनके अंदर ये परमेश्वर 그리고 के 이 वचन है, 말씀을 따라 하나하나 교육을 받았을 때 और जब वचन से एक एक करके जो वो शिक्षा 예, प्राप्त 그 करते हैं, 젊은이들의 마음이 길들여지기 시작합니다. और जो युवाओं के मन भी प्रशिक्षण पा सकते 그들이 हैं, 자제력을 얻게 되고 और उनके पास वो योग्यता होगी और बहुत ही ओरे संयम दे고 रखने के लिए और गहराई से सोचने के लिए, 그래서 정말 이 젊은이들이 좋은 일꾼으로 이제 변하고 성장이 되는 और वे उनका विकास होगा और बहुत महान कार्यकर्ता बनेंगे। 제자 양성의 가장 중요한 부분은 और सबसे महत्वपूर्ण बात ये इस शिष्यत्व में है, 하나님 우리에게 주신 이 성경 말씀 안에 그 모든 지혜가 있습니다. और पहले से ही बाइबल में बुद्धि है जो परमेश्वर में दिया है, 믿음으로 이 모든 부분들을 증거할 때 और विश्वास से इन सारी चीजों का जब आप गवाही 하나님 देते हो, 놀랍게 그들의 마음을 바꿔 가실 겁니다. अद्भुत रूपी से परमेश्वर उनके मनों को बदलेगा। 소망을 가지고 आप आशा रखिएगा, 믿음을 가지고 आप विश्वास 이 रखिएगा, 하나님의 말씀을 하나하나 펴서 우리가 증거할 때 और जब हम परमेश्वर के वचन की गवाही देते हैं, 그리고 그들과 대화하고 또 소통할 और 때 जब हम युवा के साथ बात करते हैं, वार्तालाप करते 말씀이 हैं, 우리 젊은이들을 변화시키고 그들을 놀랍게 하나님의 일꾼으로 성장시킬 거라고 मैं 믿습니다. आशा करता हूँ कि वचन जो है युवा के मन को बदल देंगे और फिर उन लोग सिर्फ 하나님 परमेश्वर के 앞에 कार्यकर्ता में 정말 우리의 बदलेंगे। 소망을 가지고 और 일할 मैं 수 बहुत 있어서 धन्यवादित हूँ 감사를 जैसे 드립니다. हम काम करते हैं परमेश्वर के अंदर, हम बहुत आशा से भर सकते हैं। 감사합니다. बहुत धन्यवाद।